Hi everyone, I'm Nancy Goyal and welcome to my channel. So we are going to talk about skin problems today. So pimples, acne, pores, anti-aging and there are many more problems. Okay. So one of them major problem is pores. जो blackheads, whiteheads, मुझे भी हो जा रहे हैं यहाँ पे blackheads and whiteheads हो जा रहे हैं. हाँ, तो अब बात करते हैं कि pores होते क्यों है. पोर्स पॉल्यूशन की वजह से जब डस्ट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है तो वो हमारे पोर्स जो है वो क्लॉग कर देती है. मतलब कि वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की फॉर्म में स्किन में मिट्टी एक तरीके से डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने एंड मेनी अदर स्किन प्रॉब्लम्स अराइजेस. हम इरिटेशन भी होती है, बार बार गंदे हाथ भी लगाते रहते हैं उसकी वजह से. तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू ऑल. So this is Nature's Shears Pores and Mask Premium Facial Oil. It has antioxidant and anti-inflammatory properties. It is widely used in Ayurveda and can be used by both men and women. 100% natural and very effective. This will protect your skin from all the problems which arise from pollution. Vitamin A, C, calcium and potassium are available in this serum. It also contains Moringa oleifera, which is a natural herb. It has antioxidant and anti-inflammatory properties. In pimples, acne, fine lines and unclogging the pores. Okay, so it comes with this bottle and a dropper also. So you can just use this dropper and another cap. You can use this, take some of your on your hand, because if you directly touch it तो स्किन के जो जर्म्स होंगे वो इस पे कैच हो जाएंगे. तो डोंट, आई प्रेफर नॉट डायरेक्टली टचिंग इट. ठीक है, एंड टेक इट ऑन योर हैंड एंड देन अप्लाई इट, और यू कैन यूज अ कॉटन फॉर इट. You can take a small piece of cotton, dab it, okay, and then just tap it on your skin, on the pores, especially on the special areas and everything like that. This works like a magic. I've been using it for a month now and it really helped me cover all the blackheads and whiteheads and unclogging my pores as well. So yeah, I hope it helps you.